यूनिट 3 कंप्लीट हेतिला फर्स्ट चैप्टर यूनिट 3 कंप्लीट हे जाइतिला नाउ लेट अस गो टू यूनिट 4 स्पीड अप करे दियंती स्पीड अप करले पिला पन्ने किछ पाइबो हां ग्रामर ता मु ए लाइन में पूरा सब जानि छ ग्रामर ता रे वर्ष आज्ञा आज्ञा हां अच्छा अथटे पढ़े दो यूनिट 3 अथर पढ़े दो ठीक अछि आज यूनिट 3 यूनिट 4 कंप्लीट कर दबा हला यूनिट 3 does the narrator have an encounter with red? How many times did he come across red? What was the outcome his encounter with red? Read the, that means in this particular unit we are going to learn about whether red and the narrator did they have any encounter relationship on the street. माने सेमाने जेतेबेले ये थिले कोन रेड थिले the street ruler and the narrator he was bound to roam on the street. So while roaming on the street did they have any encounter activities? So even if they have that encounter activities, what activities they had or what type of problems they faced? Now let us see. I wanted to conquer my fear of red. I wrote a poem about this. Means say the narrator that time he was very like what young and like he was very scary because red was very scary person and ruler of that area and red was scaring to everybody माने से समस्त को डराउथिला. So since the red was very scary person, very ferocious person, so at that particular moment this narrator wanted to conquer him. Wanted to conquer means narrator wanted somehow he will be superseding red. माने narrator चाहिले से एते पावरफुल ए भली तांकर फेरोसियस एक्टिविटीज अछि बट मु तांकु सुपरसीड करी करी आई विल बिकम फियरलेस. बुझि गला समझते सेटा हला कनक्योर ता जो मान हिस्ट्री पढुतिबो हिस्ट्री केते हाथ रखिला हिस्ट्री गोटे वर्ड अछि कनक्योर हला कनक्योर माने आउ जण को माने कर गोटे किंग रूल कवर करचंती से किंग को कोन करी डिफीट करी करी अनदर विल बी कमिंग हला तापरे. So I wrote a poem about this. This was my first piece of journalism in verse. By the next day, the whole street knew it by the heart and excelled with the triumphant and hatter. That means, 80 pillai sikhibar achi. A point sikhibar achi. The narrator, undoubtedly, he was an ordinary layman having no experience at all. But somehow, the circumstance compelled him to face all those hurdles since his parents were divorced. तांको बापा माँ जदि डाइवोर्स न थांते से एई भली सिचुएशन फेस करि न थांते तांकर ज्ञान हेई न थांता. बुझिलो तो एठी नरेटर कहउचंदी कोन दैट दिस अपॉर्चुनिटीज this experience this hurdle life this problematic life this miserable life made me to learn the lessons for the future. बुझ पाले एठी से ए पोएट केमिति हेले से आगुर पोएट नथिले. he was a very poor boy having no parental affection having no financial assistance
having no shelter, nothing he was having, but the opportunities, the circumstance, जो असुविधा पड़िले, तांकर जो दुख लाइफ आसिला, बापा तांको जो डेजर्टेड करदेले, से उठुरु से पोएट हेले, बुझिला तो ता माने एठी हला कोन एठी गोटे जिंस सिखिले आमे कोन टू हैव ए थर्नी लाइफ माने बुझिचा थर्न माने होची कंटा थर्नी लाइफ माने कंटकित जीवन जो लाइफ रे देयर इज प्रॉब्लम सो दैट देयर इज डेवलपमेंट ता माने नरेटर वांटेड टू एक्सप्लेन दैट he became a narrator because of these difficulties and that difficulties made him a poet ना से पोएट हे पर न थांदे गोटे ऑर्डिनरी लोक हे कि रास्ता रे से बुली थांदे तापर नेक्स्ट One morning on my way to school, I suddenly came upon Red and his lieutenants. His eyes seemed to bore through me. Another day, the narrator was passing by. And lieutenant means that Red's helper, Red's friends, means the people, those who are helping Red. Means when the narrator was passing by, at that particular moment, Mr. Red and Red's people, they are looking at him very staringly. Staring means aim te akhi nazar kariya to kadi staring kariya. Hala. Then that particular moment, so the narrator observed that being a small boy, he had to face such difficult life, so he wanted to overcome that one. Aha, poet, he drawled, smiled crookedly. Then, so you write verses, do they rhyme? So the narrator understood that in human life, like we are born with human brain, human life, human attachment, human morality. But Mr. Red is having inhuman activities, animalism, animal activities. So what I should do? I'll try my level best to overcome him. I'll try my level best, like somehow to suppress his power, and I'll be showing some humanity, some quality, some natural love and affection by writing the poem. माने narrator भाबिले जे मनुष्य जीव आमको सब मनुष्य को हाउची काहे मनुष्य को हाउची हमर गोटे डेवलप्ड ब्रेन अछि हमर कोन अछि पांचटा जो सेंस ऑर्गन्स एक्टिव अछि आखि कान नाक सब एक्टिव अछि so that is why we are considered as human being किंतु गोटे एनिमल को देखिले गोटे कुकुर को देखिबा गोटे बिल्ली की देखिबा तार कोन इनएक्टिव बॉडी पांचटा सेंस ऑर्गन इनएक्टिव अछि पैसिव अछि so that is why and they do not have a developed brain एठी नरेटर कहउचंती the red being a person but he is having scary face animal character very furious personality but by writing poems I want to give some lesson to the society those who are deprived of their parents so they will be getting such type of lesson for their development in the future माने सेठी नरेटर कहिले जे मो भली एई बयस रे छोट छोट पिला माने तमरी भलिया पिला नरेटर थिले तमरी भलिया छोटे छोटे पिला थिले सो नरेटर कहिले मु जदी बापा मा डाइवोर्स हला परे मो लाइफ रे एते दुख आसीची ताहाले लेट मी राइट a particular poem गोटे poem लेखे सेही poem रू फ्यूचर रे पिला माने सिखि दे also will be like me हला ता माने लाइफ रे डेवलपमेंट आसला ता माने तमु के एटा इंस्पायर कोन पला in your life if any kind of hurdle comes let us try to face it जीवन रे जते असुविधा आसी आमे ताको डिफेंड करिबा सब बेले बेड ऑफ रोजेस लाइफ मेंटेन करिबा नहीं बेड ऑफ रोजेस माने जोडा लग्जरियस लाइफ हेले हमर कोन हबो माने बॉडीटा भलो देखा जिवो हमकु गोटे हैंडसम लागिबे कि झियो माने ब्यूटीफुल लागिबे किंतु ब्रेन टा किछ नथिबो अले रेड hand that into his pocket and came out armed with knuckle duster flash like lighting and struck my head so when the red was staring at narrator so at that particular moment he took out that metal weapon and kept on the head of the narrator से जो metal जिनिसटा रखी दिले से narrator को मुंडे रे लगे दिले अले I fell down streaming with blood and lost consciousness so at that particular moment he fell down the narrator fell down
became unconscious and the blood came out because the narrator did not have any family support, parental support, society support. He was all alone. So that is why he became conscious. Maneकर तमे सब एठी पढुछ तमर गोटे कोन अछि स्ट्रेंथ अछि गोटे मोरल सपोर्ट अछि कहना बापा माँ भाई भूणी सब सपोर्ट अछि जहार मानकर एठी केही नथिबे माइंड ता केते डर थिबो केते पैथेटिक लाइफ थिबो सो द नरेटर वाज हैविंग द सिमिलर लाइफ सो दैट इज व्हाई ही बिकेम अनकॉन्शियस दिस वाज माय फर्स्ट रेम्युनरेशन एज ए पोएट ए पॉइंट बुझा रेम्युनरेशन रो ओडिया होची दरमा आमे किछि काम कले किछि पैसा पाइबा सेटा को इंग्लिश रे आमे कहूचे रेम्युनरेशन किंतु एठी रेम्युनरेशन होची कोन द नरेटर फेल्ट रिपेंटेड realized and understood that this particular incident which happened in my life this gave me remuneration for future से कहले जे एई भली मो जीवन रे जो सिचुएशन आसिला एई भली सिचुएशन ही मते लाइफ रो डेवलपमेंट पई कोन देला रेमुनरेशन देला कथाटा बुझिला बुझिला ना बुझि पल्लनी माने लाइफ रे से सक्सेसफुल हबा पई तांकर सेटा कोन होला से गोटे स्टेटमेंट इज ए झियो होची इंडियन आइडल रो सिंगर एटा होची कोन एटा गोटे काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म से झियो रो गोटे प्लेटफॉर्म पाइची इंडियन आइडल विषय जानि छ त माने वेरी फेमस लाइफ ता कुआडे कुआडे से गीत बोली बोली कुआडे पळै दिबो सो सिमिलरली हियर द नरेटर वांट्स टू एक्सप्लेन he became renowned reputed famous poet because of this activities which had happened in his life तांको जीवन रे जब एई भली असुविधा आसी न थांता पोएट से हेई पारि न थांते बुझिला I spent several days in bed when I went out with my head still bandaged so his head was bandaged he was having a very painful life he was on the bed and repenting for every moment that what kind of life he was repeating माने अनुताप करिबा हैला गोटे जिनिस को अगेन एंड अगेन रिकॉल करिबा जे मो लाइफ ता केते दुखी हैला काहे म एमती प्रॉब्लम पड़िली बापा काहे मां को डाइवोर्स कले आ गोटे रिमैरेज काहे कले सेटा को आमे कहबा रिपेंट कले बा दुख रे भांगी पड़ले I again saw red I struggled with myself but lost and took my heels means say after the bandage got cured after he became completely cured so again he wanted to teach a lesson to red that red should not be so furious red should not be like animal rather the red should have a humanity he should have human heart human love human affection human attachment but instead of all those things red does not have any symptoms of the humanity rather he is having animal character so after healing up माने भल्लो होई जिबा से जो तांकर रेड जो तांको देखैथिले अनकॉन्शियस सही तळे पड़ी जाइथिले ब्लड बाहरी थिला तापर से बैंडेज भल्लो हे गेला भल्लो हबा परे he took a decision to become quite माने जणे अन्य जन को लाइफ चेंज करिवो माने करो जणे अन्य जन को किछि कहि करी चेंज करिवो एटा समय लागिवो किंतु बाय एजुकेशन बाय राइटिंग प्रोज पोएट्री कि बाय राइटिंग सर्टेन थिंग्स वी कैन चेंज द होल वर्ल्ड माने करे जो इंग्लिश बुकटा लिखा है ए इंग्लिश बुकटा इट इज मेंट फॉर आर्ट्स इट इज मेंट फॉर साइंस इट इज मेंट फॉर कॉमर्स इट इज इन ओडिशा it is there in Delhi it is there in Mumbai it is there in Kolkata it is there in foreign country तमने गोटे बुक throughout the world mind change कर दोछ बुझि पल्ला तन सही थिला कि तो narrator thought and the narrator decided somehow to change the lifestyle character mentality of red से red रो जो activities गुडा को से change करिया पई he became a poet I rolled on my bed biting my pillow pounding it in shame and impotent fury to my cowardice so on the bed he was recalling his past memories he was thinking and the thoughts
the thought provoking ideas, the disturbances which was created by Red, it gave him a pinch of lesson, not only in his brain, but also in his activities and life. Every now and then, every moment on the bed, while sleeping, he was feeling guilty. He was feeling inferior, that how did he become so like what? So cowardice, so like weak, so important, and what is the reason? माने से भाबिले जे मु काहे की अनकॉन्शियस से पड़ी गली, मोर एई भली सिचुएशन काहे की आसिला, आउ मु काहे सुपरसीड रेड को करि परिबिनी, because Red is very strong, stout and very furious person and very scary person. Red को देखिले डर लागिवो, माने 7 फुट हाइट थिबो, हाथ माने तांकर हाथ गुडा जेमती आम जंघ गुडा सेमतिका, तांको देखिले डर लागिवो. किंतु ए जो नरेटर हेल्थ जा हेथिबो जानिथिबो, नरेटर हेल्थ हेल्दी हेथिबो कि, because his father was not there, mother also she was not having that family peace, and he must not be getting all round facilities. But how he can overcome Red को से केमती overcome करिवो? देखो खाइबा पीबा ठीक नहीं, रेस्ट भी ठीक नहीं, बट फैमिली सपोर्ट नहीं, बापा मांकर सपोर्ट नहीं, ताहले से Red को केमिति से सुपरसीड करिवे? कहलो पैसा भी नहीं, पावर भी नहीं, करेज भी नहीं, फैमिली सपोर्ट नहीं, कहा द्वारा से Red को सुपरसीड कर परिवे? सबुठारु बेसी पावरफुल जिंस कोन? माने कर जनक पाखर बहुत पैसा अछि, क्रोर्स ऑफ रुपीज, आउ जनक पाखर बहुत गोल्ड अछि, माने 5 केजी 10 केजी गोल्ड अछि, जनक पाखर 5 केजी 10 केजी गोल्ड रहले से पाठ किछि आ पढिया दरकार नहीं, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी किछि देवा दरकार नहीं, तांको एंटायर जनरेशन से गोल्ड रे ही बचि जियो नहीं कि? अच्छा गोटे रहला गोल्ड, गोटे रहला मनी, आ गोटे रहला लैंड, सबुठारु कोन प्रेशियस जिनिस, आउ किछि अछि कि? आउ किछि त नहीं. तो Red तांको केमिति ओवरकम करिवे? Red को नरेटर केमिति ओवरकम करि परिवे? नरेटर he is very poor, neither he is having financial support माने पैसा नहीं, nor he is having base माने जमी बाड़ी भी नहीं, nor he is having family support भी नहीं, ताले how will he supersede Red को केमि सुपरसीड करिवे? सबुठारु पावरफुल वेपन ह्यूमन हाथ कौन अच्छे? आइडिया से नॉलेज टा होची सबुठारु पावरफुल है कि मन रख, नॉलेज होची पावरफुल मींस सो दैट इज व्हाई एट लास्ट तमर एही भली क्वेश्चन आसीबो, तमर डिसेंबर रे 100% देयर विल बी एग्जामिनेशन, आ क्लास 10 रे जेमिति जाईथिला जो ऑनलाइन क्लास से फॉरगेट अबाउट दैट, एबे गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट हे जाईछ, and गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट हबा कथा, तो सेही भली से झियो जेंति आंसर देला, सबुठार पावरफुल वेपन थिला कहरो नरेटर कर नॉलेज. तो नरेटर वांटेड somehow he is not going to fight with Red, he is not going to supersede immorally by doing some illegal activities, rather he wanted to teach a lesson to Red. I made up my mind to vanquish it at all, whatever the cost. So at last, Mr. Narrator decided somehow he will be superseding Red, and he will be teaching a lot of lessons, lot of human character, lot of moral character to Red, so that Red should not be having such animalism. Because Red, what he did, Red was ruler of that state, and being a ruler of that state, not only he was ruling the road, but also he was scary, and by like applying certain immoral force, illegal activities, unsocial activities, somehow he was collecting lot of money, and his lieutenants were supporting him. माने से आगे से जिबे से इम्प्रेसिव वर्ड कहिकरी जन को पैसा मागिबे. फॉर एग्जांपल रास्ता रे गोटे जने गोटे बहुत धनी लोक जाउचंदी, से ताको इम्प्रेसिव वर्ड रे कहिबे, इम्प्रेसिव काले कहितली स्वीट वर्ड रे कहिबे, तबे आज्ञा कुआडे जाउचंती
जने कहला मु घर जाऊँ हाँ ठीक अच्छे आप जातु पकेट रे आप केते टंका आनी 5000 मत 4000 टका देबे कि कहले जदि से नदेले ल्यूटेनांट थे झील ल्यूटेनांट बुझुछ तो ल्यूटेनांट माने अलग जी हेल्पर सब है हेल्पर हेल्प करने सारथी बाबा कथा जानल सारथी बाबा थे मेन बाबा जदि सारथी बाबा कथा किए न शुणिला से रखी थे स्टाउट बॉडी वाला माने 6 फुटिया लोक सब रखी एत तो बड़ बाड़ी धरिक है सी हेले ल्यूटेनांट द हेल्पर है those will be escorting those will be supporting so that means narrator felt he realized he understood that such personality is dangerous not only for the society but also entire world because whatever the personality he is possessing it will be giving lot of threat to the society, lot of panic to the society, lot of miserable assistance to the society, so the society cannot grow up. Instead of that, rather I should write a poem to teach lessons. तामाने narrator सेउठु decision नेले जे एई भଳି गोटे entire society की change करिया को हेले मु किछि lesson देबी काहे by writing poems हला बुझिलो सेउठु से poet हेले जन लाइफ रे प्राय बहुत जन कर चेंज आसे ना कि तमे सब आछो के +2 आर्ट्स अछि के कॉमर्स अछि के साइंस अछि कहा लाइफ रे केते बेले कोन चेंज आसो नो वन कैन प्रेडिक्ट तो सेमति नरेटर का लाइफ रे ए भଳି आस्तिला नाउ लेट्स गो टू यूनिट 4 fear of raid or its cowardice which was more important for the narrator to deal with what method did the speaker choose to deal with fear did he succeed in his attempt to conquer fear read the following means say narrator decided that somehow he will be conquering red he will be conquering means mane karo parikha re conquering word ta mind ke asuni he will be defeating parasta kariba he will be succeeding tanko agu ko jiba he will be winning mane karo he will be asuni mind re he will lekhi debo chalibo हला चलिबो मैनेजेबल इंग्लिश सब सो somehow narrator decided repented realized somehow to conquer red for its animalism for its like futile character for its inhuman character for its immoral character which is not only dangerous for the society but also dangerous for the entire human world से चाहिए जदि एई भली लोकन को किछि लेसन न दिया जीवो ताहाले गोटे सोसाइटी के स्पॉइल करिवेनी कंप्लीटली ही इज गोइंग टू द एंटायर जनरेशन गोटे जनरेशन स्पॉइल कर देबे देखुछो नरेटर केते ग्रेट आमे ग्रेट काहा को कहबा ग्रेट कहबा काहा को आमे जदि खाई पी आराम रे सब बेले बंचिले आमे हेले सेल्फिश आमे खाइबा आमे बंचिबा आमे पाठ पढिबा आमे भलो रहइबा किंतु जे those who sacrifice their life for the welfare of others so they are known as the great person मोहनदास करमचंद गांधी से आमरी भलिया गोटे मनीष थिले किंतु से कोन हेले महात्मा तांको महात्मा अवार्ड दिया हला जवाहरलाल नेहरू को अवार्ड दिया हला पंडित सुभाष बोस को दिया हला कोन नेताजी सो दैट मींस नरेटर ए जो नरेटर जे से गोटे सिंपल पिलाडे थेले रास्ता रे बुलु थेले किंतु वर्तमान से पाइले गोटे अवार्ड पोएट नरेटर से झियर अवार्ड हला सिंगर तमे भी के तम भितर के डॉक्टर के इंजीनियर हला के आ कोन हे पारंती तेनु नरेटर डिसाइडेड somehow he will be taking decision to change the mentality of red I went into training with parallel bats and weights. After every session, I would feel my muscles were getting bigger, but slowly. So after that incident, he understood Red is very stout, very strong, very tall, and very ferocious character person. So at last, narrator also went for muscle training, gym. Somehow he wanted to build his physics so that
either physically he might defeat him or mentally he will be able to face him. से कौन कले जिम गले मसल बिल्ड अप कले कहना रेड थिले स्टाउट स्ट्रांग वेरी फेरोसियस तांको देखिले डरुथिले लोक तो नरेटर चाहिले जे तांको देखिले जेंति डर लागुची रादर आई शुड बी लाइक हिम मु जदि सेमति हे जाय मोर मसल सेम माने कर तमे एठी सब एमति देखाउछ तमे जदि टिके एक्सरसाइज करिवो टिके बॉडी बिल्डर हबो टिके वॉकिंग करिवो तम हेल्थ एमति रहबनी सब बहुत डेवलपमेंट हे जिवो so the narrator wanted somehow to be trained enough for himself to face red को से फेस करिवा पई एटी फेस ता ने verb यूज करले फेस माने होची मुहटा होची कोन नाउन किंतु टू फेस रेड हला एटी फेस ता verb हे गेला ग्रामर चल पढिबे सेति बळे पढिबे then I remembered something I had read in the book about miraculous Japanese method of wrestling which gave an advantage to the weak over the strong. So again narrator once upon a time he had read from the book about Japanese wrestler, about the lifestyle of Japanese people, about the physique of Japanese people, how they Japanese लोगों को सब देखिछ हमर बेला देखियो से हमर तीनटा लोग एई जो झियो अछि ना ए झियो चारटा झियो को जॉइन कर देले जे तार गोटे ले हला एई चारटा झियो बांधी करी गोटे तार बांधो जति के हो तांगर गोटे झियो जति हो हला माने घर गोटे रिक्शा रे तांकर से जापानी झियो गोटे झियो जाई परिबने से रिक्शा पुलर से टायर्ड हे जिवो ए झियो वाला 7टा 8टा रिक्शा रे बसि देले से रिक्शा पुलर जंप करी पड़ै से माने काई की कहले एते स्ट्रांग जापानीज चाइनीज देखे ना सर काई स्ट्रांग कहला दे लव रेसलिंग मसल ट्रेनिंग फिजिकल वर्किंग से माने बहुत फिजिकल बॉडी बिल्डर हला हम इंडियन लोक माने एमतिका इंडियन लोक से झियो को देखना ए झियो को देखना हला तेणु ए माने टिके जदि बॉडी बिल्डिंग माने ट्रेनिंग नेबे पुनी ग्रोथ होई जिवो हमर ह्यूमन ग्रोथ केते पर्यंत हुए 25 पर्यंत हुए तमर सब 25 पर्यंत ग्रोथ हबो आफ्टर 20 आउ हबनी काई हबनी से जो सेल टिश्यू गुडा को से कोन कहते कंट्रैक्ट करि जिवो हला किंतु एबे भी हे पारिबो सो दैट इज व्हाई somehow how to build up the character how to become strong like red that Mr. Narrator has read from a book that somehow he went for wrestling gym muscle training strength training somehow he wanted to at par with him tankori bhaliya se hobagu se chesta kale I exchanged a weak ration card for a textbook on jiu-jitsu means again what he did he read a book on a wrestler actually amaro odisha ro emti lifestyle hela mane karo japan चीन मु जाइछि से सब जागो मु चीन जाइछि जापान जाइछि हांगकांग जाइछि सिंगापुर जाइछि समान कर लाइफस्टाइल टोटली डिफरेंट हला समान हले कम्युनिस्ट कंट्री आमे हेलो डेमोक्रेटिक कंट्री आमे मिछो कहबा ठकीबा हमर इंडिया रे हेबो तांकर नो सच थिंग सो दैट इज व्हाई ही रेड हु नरेटर रेड द बुक एंड लाइफस्टाइल ऑफ अ रेसलर हाउ डिड ही बिकम रेसलर what activities one should perform to become a wrestler how one could become a strong person to defend at any sort of situation arises in our life and he read all those books for 3 weeks I stayed at home practicing with 2 other boys then I went out so continuously he read that book for 3 weeks एटी for काहे लागला कहला for ता हला हमर कोन प्रीपोजिशन एटी for काहे लागला मन रखि था फॉर लागिबो गोटे जोटी शॉर्ट टाइम इंटरवल लाइ माने करे से गोटे एक्सरसाइज सिखिबा को जाउछंती 3 वीक पर्यंत 3 सप्ताह पर्यंत सेठी आमे लगेबा फॉर हला माने कर जणे खाइबो जणे खाइला 3टा बेलु 6टा पर्यंत सेटा लॉन्ग लागु तमु केमते फील होउची लॉन्ग लागुची ना शॉर्ट लागुची लॉन्ग लागुची सेठी लागिबो सिंस हला जने 3टा रु 6टा पर्यंत कोचिंग आसला
तमे मन कर 3टा रु 6टा पर्यंत पढ़िबो सेटा लॉन्ग लागुच ना शॉर्ट लागुच माने पाठ पढ़िया को आसलो 3 घंटा जने खाइला 3 घंटा एक्टिविटी से मैटर ऑफ 3 आवर्स तमे मन कर खाइलो 3 घंटा तमे कहले सेटा लॉन्ग लागुच तमे पाठ पढ़िया को आसलो 3 घंटा कि कॉलेज गलो 3 घंटा ताहले सेटा लॉन्ग रे जीवो ना शॉर्ट रे जीवो वेरी गुड सेठी लागिवो फॉर देखिलो फॉर कोठी लागिवो लॉन्ग कोठी लागिवो बुक रे सब नाही एटी कोन दरकार अंडरस्टैंडिंग है ना लाइफ सारा मन रखितो था केमिति भूली जो जाने कहला मरि गले भूली जो हला मरि गले भूली जो Red was sitting on the lawn in our ad playing Bingate on the lieutenants. He was absorbed in the game. So at last like what Red, he was also equally practicing and equally he was making his body and he was looking at the narrator's life, narrator's activities. Then fear was still deep in me, urging me to go back. But I went up the players and kicked and scattered the cats. Still, the narrator was having a lot of fear in his mind because the narrator was having no support from any side. मुझे कहली no support, no सबवार्ड को से कवर अप कर देला. देखो सुनी जाओ केमती आछी. No गोटे वर्ड लगिला no ना फैमिली सपोर्ट अच्छी ना पैसा पत्र अच्छी सेटा भी गोटे सपोर्ट ना मोरल सपोर्ट अच्छी नो माने तार किछि सपोर्ट नहीं बट स्टिल देन he decided somehow how he is going to defend Red से कहले मो पाखर किछि नथिले मध्य तथापि से Red भली मु हेबी और Red संगे रे कोन करबी compete करबी and I will not be cowardice in front of him. Cowardice माने डरुआ. Red looked up surprised at my impudence after my recent flight. So when at first, when the narrator was doing muscle building training, somehow the Red saw him and after looking his training, strength training, the Red became very scary. तापरे Red टिके डरिबा को आरंभ कला. He got up slowly. You were looking for more, he asked menacingly. As before, his hand dived into his pocket for the knuckle buster, but I made a quick jabbing movement and Red, howling with pain, rolled on the ground. Means again what happened when Red observed. देखो हमरो वर्ड अछि गोटे सी माने देखिबा माने करो मु एटा देखिली एम देखिदेली छाड़ देली माने करो गोटे सेकंड देखिदेली एटा ला ग्लांस एन टिके देखिली एटा ला सी एम टिके देखिली सेटा ला लुक ऑब्जर्व माने पूरा क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन केमते हिची को कलर आछि केमते हला सेटा ला ऑब्जर्वेशन. सो Red was observing the activities of the narrator, his muscle training, his bodybuilding activities, he was looking. So when Red understood that the narrator is also going to be equally par with him, so somehow he took out his that metal weapon and somehow he wanted to show to the narrator for some illegal activities and he became little weak. से देखिले जेतबे ए नरेटर मध्ये सेही भली ट्रेनिंग नउचंती नरेटर सेही समय कोन हे गेले वीक हे गेले डर लागिला तांको. Bewildered, he got up and came at me, swinging his head furiously from side to side like a maddened bull. Then after that, Red came to the narrator. Somehow he wanted to mingle with him. Mingling, it is because Red repented and Red realized that my rivalry is going to come up. My rivalry माने जे मो भली आउ जने से बाहरिवा को से कोन कलानी ट्राई कलानी. सो somehow let me mingle माने जानी सुनी करी जनक संगे रे मिसिबा माने कर जने मो संगे रे मिसुनी हला मु मोआड जाई करी मिसिबी सेटा को माने अप्रोप्रिएट भलो इंग्लिश वर्ड रे हमें कहूचे मिंगलिंग ऑर्डिनरी रे हमें कहूचे मिक्सिंग. मिंगलिंग रो अप्रोप्रिएट मीनिंग होउची
forcibly by intentionally to mix with someone to get some benefit. Hala. I caught his wrist and squeezed slowly. I had read his book until knuckle duster dropped from his limp fingers. So what narrator did? I caught his wrist and squeezed slowly. So somehow the situation, the circumstance made them to become closer. देखिल से डिस्टेंस थिले किंतु एमिति परिस्थिति आसला रेड मिंगल विथ नरेटर एंड द नरेटर कौन कले आई कॉट हिज रिस्ट हमर ए पर्सन ता कोनते रिस्ट हला आई कॉट रिस्ट एंड स्क्वीज स्लोली से एटा को धरि गिरी कोन कले स्क्वीज करके देखिले इते केते स्ट्रेंथ अछि as I had read in the book until the knuckle duster dropped from his limp fingers. So while like squeezing the wrist, somehow the knuckle duster, mean that metal weapon, it fell down from Red's hand. बुझिगला माने एठु कोन बुझिलो रेड वीक हे गलानी nursing his hand. So the moment narrator squeezed up the hand of the red somehow he became weaker and nursing his hand. Nursing माने कौन बुझिलो nursing माने माने करो जण को हाथ को हमें जोर एमती धरि दबा जोर धरले प्रेशर हे काटिबो काटला पर कोन हो ए जो एमतीहाला सो ता पर टिक आउसिबो ए आउसिबाटा कोनते नर्सिंग देखो के एप्रोप्रिएट इंग्लिश ता बुझ माने करो मो हाथ को जण धरिला प्रबल बिंधिबो तापर किछ समय छाडला पर एटा हला और तापर ए आउसिबाटा होउची नर्सिंग देखिला केमते वर्ड सो जाउची nursing his hand red fell down again red fell down means red understood that even though I'm having a very stout very strong very ferocious character ferocious माने भयंकर हला जहा को देखिले लोक डरंती ferocious character but somehow the narrator he had taken lot of training lot of strength training lot of like gyms and he is also going to be par with me माने मोरी भलिया से हबा को so somehow he felt guilty so ता खराब लागिला guilty feel कले काहे कि the mentality of the red was to scare everybody and everybody in that street everybody was scared of red except के narrator केमती देखाउतिबे से झियो बळे देखाउतिबे नै कि काहे कहला से भलो खाइबा को पाउ नथिबे भलो पिंधिबा को पाउ नथिबे तांकर फाइनेंशियल सपोर्ट किछि नथिबो हेल्दी लाइफ थिबो कि किंतु स्टिल देन तांकर गोटे हेल्दी जिंस थिला कोन थिला कहला हेल्दी ब्रेन ता थिला हेल्दी नॉलेज ता थिला देखिबो तमरे जो फोर्थ कमिंग एग्जाम रे निश्चित आसीबो ए जो ए आर ऊपर निश्चित गोटे क्वेश्चन आसीबो ता माने तमे एठी सिखिलो कोन you should have thirst for knowledge माने मामुर ज्ञान पे शोष आसीबा कथा शोष हला हमें पानी पिउचे पानी न पि हमें रहि परिबा जेमिति माने अस्त व्यस्त हे जिबा सेमति ज्ञान पे अस्त व्यस्त हेले सेटा बेटर फॉर लाइफ he was sobbing and smearing the tears over his pock marked face with grubby fist so at last Red repented. He understood that narrator is going to defend him.